Hello everyone. So today we are going to look at this if function scenario where we have to do room allotment to our guests who are attending a wedding. The guests are from two sides, groom and bride, and they're having different relations with the groom and bride. So some are family, some are friends. We have to do floor allotment to them. The floor allotment will depend on the four conditions. Four condition means whether the combination is groom or family, then it will be second floor. If it is bride and friend, there will be third floor. If it is groom and friend, then third floor. And bride and friend, then second floor. So families of both groom and bride will stay at the second floor. Friends of groom and bride will stay on the third floor. है ना? So we have to do the floor allotment. So this is the combination and this is the floor allotment. Now, there is a formula already applied over here, okay, but I'm going to show you how to apply this kind of formula. So let us delete this. Now, we can do this using simple if condition, okay. But writing a if will be very lengthy because आपको बहुत बार if लिखना पड़ेगा because there are four criteria to be met. You will check whether the guest is groom or bride number one. Second, you will check it is family or friend number two. Then you will check the combination. So if will become very complicated. So what we can do is to simplify this, we can use concatenate. Concatenate combines the two values from two cells. So we want these combination 1, 2, 3, 4. So what I have done is we have used the formula of concatenate. Concatenate this B2 plus C2. So we have used this formula is equal to concatenate B2 is having groom like guest from and then comma, then we have put inverted commas, and inside that inverted comma we have put a plus. So it will insert a plus symbol and then C2. So we have got this combination. So these combinations is equal to this. Okay, now what I need to do is I need to check whether this combination is equal to this combination. If this is equal to this, then I can go for second floor. Okay, if this combination is equal to this combination, then I can go for third floor. If this combination is equal to this combination, I can go for third floor and second floor, so on. So now I will write if. So what I've done is I have reduced my if by combining these two. So this is one thing to learn, concatenation. Okay. Now, how to write the if function to check this condition. So what we will do is we will write is equal to if, and this is the first combination. Okay. Now this combination I will test with what? This. If this combination is equal to this combination, comma, then the result should be second floor. Is it clear to everyone? And we will freeze F1 because we don't want this to change, and we will freeze F2 also because we don't want this also to change. So I'm using F4 to freeze these two values. तो यहां तक सबको क्लियर है जो भी हम कर रहे हैं अभी? अदिति, सफल, संदीप, Yes, sir. Shreyash has also joined, है ना? So you can also try this together with me. You can delete all the content in your sheet, floor allotment, and we'll do it again. Okay. So if D2 is a combination from the guest and relation is equal to F1. F1 has groom plus family. Then the result should be F2. Okay. So this is one step. Step number one. Now, if this is true, then we'll get the allotment. If this is not true, if this is not the combination, that means groom plus family नहीं है, groom plus friend हो सकते हैं, bride plus friend हो सकती है, bride plus family हो सकती है, तो क्या? तो फिर फ्लोर चेंज हो जाएगा, सेकंड की जगह थर्ड फ्लोर आएगा. तो what we need to do is we need to test one more condition. Whenever you want to test one more condition, you will have to again use if. So I'm just teaching simple if, nested if inside if, and then we will try this using IFS. Okay, we don't have to write if again and again in that case. So again, I will write if, and my second test, logical test will be if this combination is equals to the second combination. Okay, and I'll freeze this also because I don't want this to change. Then the answer should be this one.
Okay, F4. Okay, so if this value in the first cell D2 is not equal to F1, then it could be equal to G2. If it is equal to G1, sorry, then I want the result as G2. What if it is not G2? Then again, I will have to test the third time. So I will write one more if, and again I will select the same cell D2 is equals to, now I am going to check whether it is F4. If it is F4, then my result should be F5. Okay, so this is what I want. What if this is not also the case? So far we have tested condition 1, condition 2, condition 3. Now the only condition which remains to be tested is fourth condition. So if the test is not successful in the first, second, third attempt, then finally the answer would be fourth one. So we need not test anything. We can just say second floor, F5, and we can close this. Okay, so that means we have written three ifs. There were four conditions. We have written only three ifs. Why? Because the fourth condition doesn't require to be tested. If all the three conditions fails, then the fourth will be the answer. Okay, so this completes my formula. But if you look at the formula, if you look at the second and the third if, the if logic says that if this is a logical test, this is the value of true and value of false. So this if is complete. If you look at this is if this is the logical test, then this is the value, else this is the value. Okay, this also is complete. But if you look at the first if this is true, then if this is a logical test, if this is true, then this is the result. Else what? Okay, so else, then you have got this if. Okay, so all the ifs are complete. Now we can simply close the bracket. So how many brackets you have opened? You have to close that many brackets. So this purple bracket is closed here. The red bracket is not closed. So I'll close the first red bracket. So this if is also complete. And then the black one. So the other if is also complete. Now our formula is ready. Now we can press enter. When we press enter, we are getting second floor. Is second floor the right answer for groom plus family? Just concentrate here. I'm just marking it with yellow. This second floor is the right answer. Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now, what if I change groom to bride? If I write bride over here, now what will happen to the answer? It will become bride plus family. So bride plus family is also on the second floor. It is remaining same. If I make bride plus friend, then what should be the answer for bride plus friend? It should be third floor. So now see, our answer is changing to third floor. If I say groom plus friend, then also the answer remains same. If it is groom plus family, which was the original case, it is second floor. And if you simply drag this formula down, Control D, you will get all the answers. So have you now understood how to write the if condition? I want confirmation from everyone. ये आपको समझ में आया? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. आई विल एक्सप्लेन. Yes. इज इट क्लियर एवरीवन? सर एक डाउट है। सर हम फ्रीज इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 10 गेस्ट हैं यहाँ पर, तो वी वांट कि वो रेफरेंस लेंगे तो फिक्स रहना चाहिए। हाँ हाँ, 10 गेस्ट है तो हम हर एक गेस्ट के लिए चेक करना चाहते हैं. तो जो हाँ। गेस्ट लिखे हैं और जो रिलेशन लिखा है वो है सेल डी में. करेक्ट, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन बना दिया है. तो D2 के बाद D3, D4, D5, D6, D7 सबके लिए हमें टेस्ट करना है. तो जब सबके लिए हमें टेस्ट करना है तो ये चेंज होता रहना चाहिए. मतलब गेस्ट वाला सीक्वेंस हर एक में चेंज होता रहे. ठीक है. तो वो चेंज कब होगा? व्हेन यू अलाउ देम टू चेंज. जब आप सेल का रेफरेंस कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट शुड चेंज. इसलिए मैंने उसको फ्रीज नहीं करा. लेकिन जो मुझे कंडीशन टेस्ट करनी है, जो कंडीशन का रिजल्ट आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई आई हैव केप्ट दैट कांस्टेंट. तो अगर आप देखेंगे F1, G1, G2, G3, G G F2, F4 एंड G4, आई हैव फ्रीज दोस. जो जो मुझे कांस्टेंट रखना है, मतलब दे शुड नॉट चेंज, तो आई हैव फ्रीज दोस. अगर मैं फ्रीज नहीं करता, तो जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करता, तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे D2 है.
if you see, look at the starting of the formula, it is D2 is equal to F1, correct? But if I go down, it has become D3. D2 से क्या यस सर। बन गया? D3 बन गया. बट F1 F1 ही रहा, F2 नहीं हुआ. वो इसलिए नहीं हुआ ओके सर। बिकॉज ये फ्रीज्ड. अगर मैं फ्रीज नहीं करता तो वो F2 हो जाता. एंड यू इफ यू लुक एट F2, F2 डजंट हैव द कंडीशन, इट हैज अ रिजल्ट. तो मेरा आंसर पूरा गलत हो जाता ओके सर। है ना. दैट इज द रीजन व्हाई आई फ्रीज दिस. Correct. Now this is one method of solving this by using simple if. ठीक है. Now what we will do is we will do the same thing by using IFS. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ if. Now we will do the same thing by using IFS is equal to IFS. Now, IFS function says that logical test, then value of true, comma, logical test 2, value of true, logical test 3, value of true. It doesn't talk about what if the value is false. Okay. So it's saying you test one condition and give the answer for that condition. If that is not true, then you tell us the second condition, give the result for second condition. That's it. So what we are going to do is we are going to say if this cell, the first cell is equals to, always make it a habit to write the formula in the formula bar. Okay. So we are writing the formula in the formula bar now. So if D2, the combination that I want to check, is equals to this G1, because this is my first condition and I'll freeze it again. Okay, comma. If this is true, if this is the logical test, if this is true, then I want the result as flow 2. So I'll freeze this. Okay, comma. Now, again, what I will say, now I will check the second condition. So to check the second condition, my cell is same. My value that I want to check is coming from D2, it will remain same, comma. But instead of G1, now I will select H1 because I want to check this combination, comma. This is my logical test. If this is true, then I want this result, third floor. So H2, comma. This is the second test I want to do. The third test that I want to do is on the same cell. And now I want to test it for the third condition, which is this. If this is true, then I want this result, comma. Now again, last time I want to check that again cell D2 I want to check, and this time I want to check it for this condition. Now I cannot say कि just give me that result. I have to give the logical test also here. Okay. So yeah, so if this is true, then this should be the result. So this is how I will write IFS. So this is your IFS function. So logical test 1, then result 1. Logical test 2, result 2. Logical test 3, result 3. And logical test 4, result 4, and enter. You will get the same answers. You can just have a look at the formula, how I've put, and if you have any questions, you can ask. Is it clear, everyone? यस सर। Okay. Now this is if this is IFS. Now we are going to introduce IFS and AND. So same thing we are going to do with IFS and AND. IFS plus AND. And the purpose of doing this is to reduce the length of the formula. Is to reduce ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला हमने जो लिखा है ये, इसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे.
ये हमारा पर्पस है एंड यूज करने का। नाउ व्हाई डू वी हैव टू यूज एंड विल चेक टू कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने IFS एंड लिखा है, ठीक है। इससे थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है इनफैक्ट, है ना। IFS एंड और यूज करेंगे तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बट आई शो यू दीज कॉम्बिनेशंस, then you can decide which one to use. So first use IFS and. Now let us use IFS and AND. Now what will AND do? Let us first look at the AND function. AND function क्या करता है? It tests for two conditions, and if that is true, it gives you true. If that is false, both the conditions are false, then it will give you a false as a result. For example, I will say AND this groom. This is the first test is equals to uh let's say this groom. Okay, so I want to check whether the guest is groom or bride. So I'm saying I want to check that the guest should be groom, comma, the relation should be family, family. So this is the first logical test I am putting. Okay, so groom is equal to groom, family is equal to family. Correct. Now what should I freeze in this and what should I freeze in this and? B2 को freeze करेंगे, H8 को freeze करेंगे. Yes, people, what should I freeze? सर H8, नो 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 सर H8 नहीं होगा। सफल, संदीप, क्या फ्रीज करेंगे? H8, और H9 को भी फ्रीज करना होगा। यस सर, दोनों करें। दोनों को करेंगे, करेक्ट। चलो इतना ही करता हूँ, अभी मैं दोनों को करा और मैंने एंटर प्रेस करा, तो क्या आंसर आया? ट्रू। इफ आई कॉपी पेस्ट दिस फॉर्मूला डाउन, हियर आई एम गेटिंग फॉल्स बिकॉज फैमिली इज ट्रू बट ब्राइड, द गेस्ट इज नॉट ग्रूम, इट इज ब्राइड। करेक्ट। तो फॉल्स आ गया। जहां पे भी आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच नहीं होगी तो इट विल गिव यू फॉल्स। जहां दोनों कंडीशन मैच हो गई वहां पे आपको ट्रू हाँ, मिले। ट्रू आ गया। हाँ, इज इट क्लियर? तो यस सर। हमने ये क्या करा, हमने ये कॉम्बिनेशन चेक कर लिया कि भाई गेस्ट ग्रूम होना चाहिए और रिलेशन फैमिली होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे अगर ये कॉम्बिनेशन है, इफ दिस इज अ कॉम्बिनेशन, देन व्हाट यू डू, यू डोंट गिव मी ट्रू एंड फॉल्स, यू गिव मी द फ्लोर नंबर। एम आई राइट? इसी इसी फॉर्मूले को हम एडवांस करेंगे ना। तो हम इस फॉर्मूले से पहले, एंड से पहले, एंड फंक्शन से पहले, वी विल पुट इफ IFS because you want to test multiple conditions. So we will put IFS. Now in the IFS, and what I have done, instead of using the combination column, I've used these two separate columns. मैंने दोनों कंडीशन चेक करा ली IFS में. If this condition is true, both the conditions are true, then what should be the floor allotment? और यहाँ पे हम एक काम करते हैं. Let me make it little complicated in the sense little more realistic. So we'll put different floor numbers. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ्लोर नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। चारों को अलग अलग फ्लोर दे दिया, कोई कॉमन फ्लोर नहीं। यू विल सी एज आई चेंज द वैल्यूज ओवर हियर, द रिजल्ट हैज चेंज ओवर हियर। दिखा आपको? ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गए ना? क्यों हो गए, कैसे हो गए, कोई बता सकता है? अदिति, कैन यू आंसर दिस? Why, as I change the values, it changed the cells answers also? सर हमने रेफरेंस तो वहीं से लिया हुआ है ना, मतलब रिजल्ट तो वही है ना। वही फ्रीज नहीं हाँ, किया। एग्जैक्टली exactly, वही समझाना चाह रहा था, वही आपको समझ में आ भी गया, इनफैक्ट आपने कंफर्म भी कर दिया। रिजल्ट का हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस लिया है इसलिए मतलब हमारे को सेम आंसर मिल रहा है।
करेक्ट? Perfect. इसलिए you should make it a point whenever you are writing any formula, always give a reference. Always give a reference. Why? What will happen when you give a reference? It will automatically help you in getting the answers even if you change the condition. ठीक है? Now let us complete this. इसको खत्म करते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करें, कंडीशन चेक करी. नाउ आई वांट टू पुट द फ्लोर, सो आई विल राइट डाउन IFS इन फ्रंट ऑफ दिस. IFS का ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, कॉमा, देन व्हाट शुड बी द रिजल्ट? इफ दिस इज द फंक्शन, देन व्हाट शुड बी द रिजल्ट? हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर हमने कहाँ लिख रखा है? H2 में. सो आई विल टाइप H2 and I'll freeze H2 F4. Just write H2 and press F4. ठीक है? Now this is the first logical test. ये हमने पहला logical test कर लिया if and को use करके. Now what is the next logical test I want to check? I want to check the other combination. Other combination means bright plus friend or maybe bright plus family. है ना? तो what I will do, again I have to use and. Again I have to use and in the end I will select this groom. Now this groom I will replace with bright and I'll freeze bright, comma. Again family I want to replace with, or I want to check only family only because I have changed groom. Now I'm checking whether it is bright plus family. If it is bright plus family, दिस इज द लॉजिकल टेस्ट. तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे. ये दो कंडीशन चेक करेगा. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ब्राइट प्लस फैमिली है, तो कौन सा फ्लोर मिलना चाहिए? एवरीवन, कैन यू टेल मी द सेल रेफरेंस? अगर ब्राइट प्लस फैमिली है तो कौन से फ्लोर पे भेजो? I5. I5, करेक्ट. सो आई विल टाइप I5 एंड आई फ्रीज दिस. आई विल फ्रीज दिस I5 F4. ठीक है, ये I5 हो गया. तो अगेन आर नेक्स्ट एंड इज कंप्लीट नाउ. Next IFS is complete, comma. Third test. So again you will write and you will write again B2 is equals to. This time I want to check what? I want to check groom and friend wala combination. So I will select groom again, F4, comma, then relation C2 is equals to friend. Friend is I9, comma. इफ दिस इज द लॉजिकल टेस्ट, मतलब अब कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ग्रूम प्लस फ्रेंड. तो कौन सा फ्लोर मिलेगा इनको? थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर कहाँ लिखा है? H5 में. सो आई टाइप H5 एंड फ्रीज इट. एंड वन मोर टाइम, द लास्ट कॉम्बिनेशन व्हिच आई नीड टू टेस्ट इज ब्राइड एंड फैमिली. है ना? लास्ट एक फ्लोर हमारा अलॉटमेंट रह गया ना. देखिए H2 हो गया, I5 हो गया, I9 हो गया, I2 बाकी है. ब्राइट प्लस फैमिली वाला कॉम्बिनेशन बाकी है. सो आई विल टाइप एंड B2 इज इक्वल्स टू ब्राइट. ब्राइट हमने लिखा है I8 में. I8 लिखूंगा, F4 कर दूंगा, कॉमा, ब्राइट प्लस फ्रेंड आई वांट टू टेस्ट. सो फ्रेंड के लिए C2 इज इक्वल्स टू फ्रेंड इज इन I9. I9 को फ्रीज कर देंगे. ये हमारा लॉजिकल टेस्ट अगर क्लियर होता है तो I2 से रिजल्ट आ जाना चाहिए. दैट्स इट. So this is the completion of my ifs with and. So I've written 4 ands because I wanted to test 2 condition in one, and one of IFS, and this is good to go, and we are getting the same results. Is it clear to everyone? है ना? It will require certain practice, but with practice you will be making it. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. Now last combination that I'm going to show you is IFS with or and. अब और का क्या मतलब है?
नाउ सी सेम प्रॉब्लम बट वी आर अप्लाइंग डिफरेंट लॉजिक टू इट, है ना। अब और यूज करेंगे मतलब हम बोलेंगे कि देखो अगर हम रूम अलॉटमेंट देखते हैं तो फैमिली फैमिली अब सभी अलग अलग फ्लोर पे हैं, अलग अलग फ्लोर पे हैं। लेकिन मैं ये चेक कर सकता हूँ क्या कि ग्रूम हो चाहे फ्रेंड हो या फैमिली हो, है ना, रूम अलॉटमेंट ये होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते क्योंकि सबका फ्लोर अलग है। तो कैन आई यूज और एनीवेयर? क्या यहाँ पे और काम में आएगा? कहीं पे भी नहीं आएगा। Why I cannot use or? Because the every combination has a different floor. If they were common floor जैसे हमने पहले कर रखा था, तो फिर मेरे को I could have used or. For example, suppose I say I am just changing this for this or वाला concept. I am just changing this. So I am just copying this and pasting it here, over here. मैं बोलता हूँ ग्रूम प्लस फैमिली या ब्राइड प्लस फैमिली दोनों को फर्स्ट फ्लोर दे देते हैं, और ब्राइड प्लस फ्रेंड और ग्रूम प्लस फ्रेंड को सेकंड फ्लोर दे देते हैं। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन फर्स्ट फ्लोर? व्हाट इज द कॉमन क्राइटेरिया टू गेट द फर्स्ट फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर पे कौन कौन रुक सकता है? बताओ कौन कौन रुक सकता है फर्स्ट फ्लोर पे? ग्रूम एंड फैमिली ग्रूम, होनी फैमिली। चाहिए। ब्राइड एंड फैमिली। हाँ, या तो ग्रूम की फैमिली या ब्राइड की फैमिली। सेकंड फ्लोर पे कौन रुक सकता है? ब्राइड एंड फ्रेंड। फ्रेंड रुक सकते हैं। फ्रेंड एंड ग्रूम। हाँ, फ्रेंड रुक सकते हैं या तो ग्रूम साइड से हो या ब्राइड साइड से हो, GF ब्राइड, GB। ठीक है। Now, let us try this combination. Last thing for the day, है ना, let us try this combination. So again वो मेरा C2 और D2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सपोज आई वांट दैट ये तीन कॉलम मुझे नहीं देखने बिकॉज दिस वी ऑलरेडी डन। सो व्हाट आई वांट इज ये कॉलम D जो है उसके बाद सीधा H दिखे और मुझे आगे का ये वाला भी दिखता रहे, ये नहीं देखने। What I can do here, guys, tell me. I don't want to see EFG and I don't want to hide it also. Then what to use over here? Come on. फ्री स्पेन्स क्या यूज करेंगे हम? अदिति? पता नहीं सर। हाँ अदिति, सर वो आप फ्री स्पेन हाँ वाला वीडियो देखा था मेरा? यस सर, थर्ड थर्ड क्लास देख ली सर, थर्ड तक कर लिया। हाँ, तो फ्री स्पेन कहाँ लगाएंगे हम? डी के बाद हमें डी कॉलम तक स्टैटिक रखना है, उसके बाद सब मूविंग रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, Alt WFF इज द शॉर्टकट की। आई एम इन कॉलम नंबर E एंड रो नंबर 2। आई प्रेस Alt WFF, सी व्हाट हैपेंस नाउ। So if I move towards the right, now you see I am able to see the column H just after column D. Okay, and here I don't want to see these because this is my criteria. Now I cannot apply freeze pin one more time. I can hide these columns. I can hide these columns. What is the shortcut key to hide? यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी आपको आप करेंगे तो हाइड हो जाएगा, लेकिन वो विंडो हाइड होगी, ठीक है। ये देखो ये पूरी विंडो ही हाइड हो गई, इसको अनहाइड करते हैं। हमें कॉलम हाइड करना है। आई वॉन्ट टू हाइड ओनली दीज टू कॉलम्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की? Control+0। आई एम राइटिंग द शॉर्टकट कीज ओवर हियर। Alt+W+F+F for free spin and Control+0 to hide a column, Control+9 to hide a row। तो ये हो जाएगा फ्री स्पेन। तो शॉर्टकट कीज याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ने पड़ेंगे तभी याद होंगे। और याद हो जाएंगे फिर आप फटाफट से सुपरमैन जैसे काम करोगे। चलिए लेट्स गो बैक।
अब कितना आसान हो गया ना, ये के मैंने गैप छोड़ा है ताकि हमारे को कंडीशन दिखे और ये दिखे। नाउ वी आर यूजिंग द और एंड ऑल, दिस इज व्हाट आई वांट, ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पर। लॉजिक मेरा ये है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस विद द ग्रीन कलर, दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। ठीक है चलो लेट अस यूज एंड और एंड इफ्स। तो व्हाट आई नीड टू टेस्ट इज, आई नीड टू टेस्ट टू थिंग्स। पहले मैं चालू करूंगा फैमिली या फ्रेंड से, तो या तो फैमिली हो, है ना, फैमिली हो, ये तो कंपलसरी की फैमिली होना चाहिए, और फिर या ग्रूम हो या ब्राइड हो, कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो आई एम यूजिंग आई एफ एस, एंड नाउ आई एम सेइंग एंड बिकॉज आई वांट टू टेस्ट टू कंडीशंस। इन द एंड द फर्स्ट कंडीशन शुड बी फैमिली। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू फैमिली। फैमिली हमने कहाँ लिखा है, और अच्छा वो मैंने हाइड कर दिया क्या वो वाला कॉलम। चलो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, पहले मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ the four parties: groom, bride, family, friend. ठीक है, now is equals to IFS, and first I want to check whether the relation is family or not, is equal to family, and I'll freeze this. If the relation is family, this is the first logical test. Then I want to check or whether it is groom or bride, तो और लगाएंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी चलेगा। फिर आप गेस्ट लेंगे, इज इक्वल्स टू ग्रूम, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा वापस गेस्ट लेंगे, और इट कैन द गेस्ट कैन बी व्हाट, ब्राइड। ये हो गया। ठीक है, इफ एंड और, अगर ये कॉम्बिनेशन है, मतलब फैमिली है और ग्रूम और ब्राइड में से कोई भी है, तो व्हाट फ्लोर, विच फ्लोर वी नीड टू गिव, वी नीड टू गिव फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक ही फ्लोर देना है, कॉमा। ठीक है, अगर ये टेस्ट नहीं है, मतलब फैमिली नहीं है ग्रूम ब्राइड की, तो क्या होगा, फ्रेंड होगा। तो आप फ्रेंड वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, अगेन आई हैव टू राइट एंड, और एंड के अंदर मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं वापस से रिलेशन चेक कर रहा हूं, बट रिलेशनशिप नाउ दिस टाइम इज टू बी फ्रेंड, सो आई पुट फ्रेंड, कॉमा। जब फ्रेंड वाला कॉम्बिनेशन आ गया तो आई नीड टू चेक वेदर इट इज ग्रूम और ब्राइड, सो अगेन आई विल से ग्रूम इज इक्वल्स टू ग्रूम F4, comma, again groom can be bride also. F4, that's it. If this is the combination, then I want second floor. I want to give second floor M2 and close the bracket for this, and close the bracket for the previous, and then close the bracket for IFS, and that's it. एक मिनट, सो आईएफएस के बाद मैंने लिखा एंड में आई हैव टेस्टेड वन एंड टू कंडीशन, यहाँ मुझे क्लोज करना, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव टू क्लोज द एंड ब्रैकेट ओवर हियर, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे आप एंड शुरू कर रहे हैं, एंड में आपने पहला लॉजिकल टेस्ट ये था, दूसरा लॉजिकल टेस्ट ये था, और तो यहीं आपको ब्रैकेट क्लोज करना है इसका। ये रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, फिर आपको एंड वापस आपने यहाँ शुरू करा, आपने और यहाँ खत्म करा, यहीं पे आप एंड का ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, एंड लास्ट में यू जस्ट हैव टू क्लोज द आईएफएस ब्रैकेट, दैट्स इट। सर ब्रैकेट रह गया। ब्रैकेट रह गया, कौन सा वाला रह गया, एक सेकेंड, एक एंड वाला, ये तो हो गए, ये कौन सा ब्रैकेट रह गया, हो तो गया। एंड का ही फर्स्ट, हम्म, एंड का आई थिंक। नहीं देखो, एंड का हमने ये ओपन करा ब्रैकेट, ठीक है, ये मैंने पहला टेस्ट लिखा, फिर मैंने और लगाया, ये मैंने दूसरा टेस्ट लिखा, दूसरे टेस्ट का ये और का ब्रैकेट क्लोज करा, और ये एंड का ब्रैकेट क्लोज करा। ठीक है, फिर मैंने वैल्यू ऑफ ट्रू, ये हमने लॉजिकल टेस्ट का लिखा वैल्यू ऑफ ट्रू। ठीक है, फिर हमने सेकंड एंड लगाया, ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखी लॉजिकल टेस्ट, उसमें मैंने डाला ये, है ना, और दूसरा फिर और लिखा, और का मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये वाला ब्रैकेट मैंने एंड का भी क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ गलती हो गई, ठीक है, ये हमने जो एंड और लगाया है ना, इसका वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू मैंने दे दी M2, करेक्ट।
सब कुछ ठीक ही है, कहीं दिक्कत है नहीं कुछ। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं है। पहले ये तो सेकंड फ्लोर आ गया क्योंकि फ्रेंड, सारे फ्रेंड को हमने सेकंड फ्लोर दिया था। फैमिली में क्या दिक्कत होगी, लेट्स सी। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेकिंग। ठीक है। हाँ, N4, 1 2 3 4 फैमिली, ये ठीक है। तो पहले मैंने फैमिली को फैमिली से चेक कर लिया। देन B2 इज इक्वल टू N2, N2 में है ग्रूम, ठीक है। और N3 में ब्राइट, ये भी ठीक हो गया, कॉमा। तो इनको देना है L2, L2 इज फर्स्ट फ्लोर, ये भी ठीक है। एंड फिर C2 मतलब फैमिली, फैमिली में मैंने इस बार डाल दिया फ्रेंड, ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर B2 में ग्रूम, ग्रूम को हमने चेक करा ग्रूम से, और ग्रूम को हमने चेक करा ब्राइट से, N3, ये भी ठीक है। तो हमने दे दिया M2 हो गया। आई थिंक इट इज परफेक्टली फाइन, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग मार्क्स। ओ, आई हैड डन अ स्पेस, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था। कई बार ऐसा हो जाता है ना, व्हेन यू टाइप यू पुट अ स्पेस, जब आप स्पेस दोगे ना तो इट विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस फैमिली इज अ फैमिली, यू हैव टू रिमूव द स्पेस, अदरवाइज इट वाज परफेक्ट फॉर्मूला। तो आपको इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया है वो सही है, गलती नहीं हो यस सकती है। सर। तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस ओनली वंस योर लॉजिक इज क्लियर एंड वंस यू हैव प्रैक्टिस इट इनफ कि गलती नहीं हो सकती। नाउ एनी क्वेश्चंस एनीवन, वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन ओवर हियर टुडे। नो, नो सर। है ना, तो ये प्रैक्टिस करो। ऐसे मैं आपको एक और बना के दूंगा जो असाइनमेंट है ना, बट इसको प्रैक्टिस करो। आज हमने काफी मतलब डिटेल में डिस्कशन किया इफ के ऊपर। इफ नॉर्मल देखा, फिर आईएफएस देखा, फिर आईएफएस एंड देखा, फिर आईएफएस एंड और देखा। इसके ऊपर कुछ होता नहीं है इफ के अंदर। एंड यू हैड लर्न कॉन्कैटिनेशन ऑल्सो। इस वाले इफ में हमने इससे पहले वाला जो इफ था उसमें कॉन्कैटिनेशन भी देखा था, ठीक है। सो आई शेयर दिस विथ यू ऑल एंड इन द ग्रुप, and this is it for today. Okay, tomorrow we will have a class and we will start with lookup functions tomorrow. Okay, any more questions, anyone? No, sir. Okay, chalo, have a great Sunday. Thank you.